नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। आपन जदि आम चैनल को प्रथम आसछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। देखो आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाए जो कि माननीय सुप्रीमकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देती। तो से राय आम देखा समस्त कर्मचारी अच्छा से आम कहीपर यहाँ गोटे बड़ खबर। सुप्रीमकोर्ट को राय अर्थ आप जापे। तो से अनुसार देखा देखो जजमेंट टी अच्छी जो ओवरऑल जजमेंट टी रही ये माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते जे कंपलसरी रिटायरमेंट डज नॉट फॉरफिट रिटायरमेंट बेनिफिट। जदि जड़े कर्मचारी को कंपलसरी रिटायरमेंट दिगला जोटा कि रिटायरमेंट बेनिफिट को बंद कर ओनली डिसमिसल कैन डेनी देम। तो ये माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते जदि डिसमिसल कर बहिष्कार कर चाकरी ताहले जो रिटायरमेंट बेनिफिट को बंद कर माननीय सुप्रीमकोर्ट जजमेंट रे कहते। तो से विषय आम संपूर्ण देखा खबरटी। तो सुप्रीमकोर्ट ऑफ इंडिया माननीय भारतर सुप्रीमकोर्ट इन ए सिग्निफिकेंट रूलिंग ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू रे डिसिप्लिनरी मैटर जो होता कर्मचारी विरुद्ध में हाज सेट असाइड जोटा कि सेटा से ऑर्डर ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट जोटा थिला एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल that had invalidated the compulsory retirement of a Canara Bank sub-staff member. The apex court comprising Justice J.K. Maheshwari and Justice Vijay Bishnoi affirmed that the original punishment imposed by the bank disciplinary authority holding the tribunal and high court had acted as an appellate body by reappreciating evidence which is beyond their jurisdiction. एटी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते जजमेंट क्लारिफाई दैट इन ए डिपार्टमेंटाल इनक्वारी गोटे जजमेंट क्लारिफाई कराई जो डिपार्टमेंटाल इनक्वारी चार्ज नीड ओनली बी प्रूवेन ऑन ए प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट बियॉन्ड ए रिजनेबल डाउट। द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन ए बैंकिंग सेक्टर। ये कही बैकग्राउंड केस देखा जे कि द केस ओरिजिनेटेड मिस्टर गगनर नरसिम्हा जी अच्छा हु जॉइन कैनरा बैंक ऑन ए डेली सब स्टाफ जी कि 1990 जॉइन करते एंड वाज लैटर कन्फर्म चाकरी स्थायी होता परवर्ती पर्यायर। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वेयर इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन जोटा कि 2004 रे दैट अनकमोड सीरियस इरेगुलारिटी जो होता बैंक रे से उपरे ए चार्जसीट इश्यू जोटा विरुद्ध में होता 2005 रे चार्जसीट इश्यू होता। सेवराल ग्रेव एक्यूजेशन इट वाज एलिज मिस्टर गगन नरसिम्हा जी अच्छा मेन अनऑथराइज डेबिट इन ए सेविंग बैंक करते टैंपर विथ फॉल्सिफाइड बैंक रिकॉर्ड ओमिटेड दिज अनऑथराइज एंटराइज विथ अपडेटिंग कस्टमर पैक्स बुक ता सहित ब्रांच मैनेजर जी अच्छा कहीकि लोन करदे ड्यूरिंग ए प्रिलिमिनरी इंक्वारी जोटा कि 2004 होता जे अच्छा एडमिटेड टू द सर्टन इरेगुलेटरी होता बोली सी एडमिट करते फॉलोइंग ए डोमेस्टिक इंक्वारी व्हेयर द इंक्वारी ऑफिसर फाइंड ऑल चार्जेस प्रूवेन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन जोटा कि मार्च 15 2006 इम्पोज द पनिशमेंट ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट दिया। द डिसीजन वाज सब्सिक्वेंटली अपील्ड द अपीलेंट अथॉरिटी ऑन नवेम्बर 22 2006 प्रोसीडिंग एट द ट्रिब्यूनल एंड हाईकोर्टर से समान धरण केस होता जोटी कि देखा आर्ग्यू बिफोर सुप्रीम कोर्ट जोटा बिफोर द अपेक्स कोर्ट कैनरा बैंक आर्ग्यूड दैट द ट्रिब्यूनल हैड एक्सीडेड इट्स जुडिक्शन अंडर सेक्शन 11A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बाय एक्टिंग एज ए कोर्ट ऑफ अपील and reappreciating evidence, especially after finding the initial inquiry to be fair. The bank asserted that the strict rule of evidence do not apply to disciplinary proceeding and that the employee action had led to a loss of confidence, a crucial element in the banking industry. जोटी आगे हम देखा सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस थिला सुप्रीम कोर्ट एंड माननीय सुप्रीम कोर्ट हेवीली क्रिटिसाइज द अप्रोच टेकन बाय द ट्रिब्यूनल एंड द हाई कोर्ट stating that they had failed to take into consideration that the settled principle of law in respect of judicial review in disciplinary matter. The court reiterated that judicial review is limited to determining if the inquiry was competent, if natural justice was followed, if the findings were based on no evidence were perverse. Justice Bishnoi, writing for the bench, observed that it is also equally settled that strict rule
of evidence are not applicable in the departmental proceeding and the charges against the delinquent can be proved on preponderance of probability। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय कहते कि शेष में जो कर्मचारी जनक जेहेतु डिसमिसाल कराई सर्विस केवल कंपलसरी रिटायरमेंट कराई से जो रही रिटायरमेंट बेनिफिट गुड़िक प्रदान करमती कि ग्राच्युटी हो पेंशन हो एसबू प्रदान कर। तो आज ये गुरुत्वपूर्ण खबरटी जदि खबरटी आपको भल लगा दयाकर निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।